Okay, so today we are going to talk about waters, the problem of water and the things of water that we need to discuss in our syllabus. The water. First of all, the main thing about water is the presence of water. If we want to test the presence of water, we should have something to test, right? So it's not like that. If you want to check water, so just taste this or just like take a sip of this. इस तरह नहीं हो सकता. Okay, not all the time the water is drinkable for us, right? For suppose sanitary water अलग होता है, waste water अलग होता है, tap water अलग होता है, distilled water अलग होता है, mineral water अलग होता है. We have a lot of type of water. Not all the waters are drinkable, right? So we cannot check the presence of water by having a sip of that, right? Or we cannot taste that, right? So we have different tests to check the presence of water, and the test number one is what? Yes, copper sulfate, but not only copper sulfate. You need to say that anhydrous copper sulfate. So you can say that add anhydrous copper sulfate. Add anhydrous copper sulfate. Anhydrous, and you need to write the name copper 2 sulfate because it is a transition metal. So you must need to use the oxidation state of this. And you need to keep remember that copper 2 sulfate in anhydrous form, it is a white powder. It is a white powder, right? When you shift it towards water, so it absorbs the water content. Absorb the water content, and the water content is actually used it to make crystals. So it is a water of crystallization. When it added to the formula, so it will be having blue crystals. It will be having blue crystals, right? So you can say that the observation of this test would be white powder changes to blue crystals, right? Got it, bacho? Yes, sir. It will be known as, this will be hydrous copper sulfate. This would be hydrous copper 2 sulfate. Remember, you always need to write the oxidation state for transition metals while you are writing the names of the compounds, right? And then we have one more test, bacho. And the next test is about the paper. We have one more paper known as cobalt 2 chloride paper. So you can say that place cobalt 2 chloride paper. Place cobalt 2 chloride paper, and if there would be the presence of water, so it will change its color. It is a blue in color, right? And it will change its colors to pink, right? So you can say that blue color changes to pink. Blue color changes to pink, right, bacho? Yes, sir. Yes, sir. Yes, so bacho, what you need to do, you just need to write these two tests separately somewhere in your copy, right? And do not write anything with this, right? अगर आप इसको अपने नोट्स में लिखना चाह रहे हो, अभी नोट्स में भी लिख लो, बट एक पेज अलग से बना लो जिसपे सारे कलर चेंजेस आपको लिखने हैं, राइट? जैसे फिलहाल आप ये वाले कलर चेंजेस उस पर लिख लेना. इसी तरह बाद में जब मैं आपको रिवाइज कराऊं तो कैटाइन और एनाइन वाले कलर चेंजेस भी उस पर लिखना. इसी तरह गैसेस के टेस्ट भी आप उस पर लिखना. इसी तरह आप जो उस पर जो है रिड्यूसिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के टेस्ट भी आप उस पर लिखना. जितने भी कलर याद करने वाली चीजें हैं वो आप सारी उस पे लिख लेना, और जितने भी टेस्ट और ऑब्जर्वेशन है वो आप एक जगह लिख लेना अलग से, ताकि व्हेन यू आर गोइंग टू रेडी फॉर द फाइनल CIEs तो आप ये 2-3 पेज लाजमी दोबारा से रिव्यू करके जाएं, ठीक है? सो ये अभी आप वाटर के नोट्स में भी लिखो, और एक अलग से पेज आपके पास होना चाहिए जहां पर आप इसको लिखें, तो वो आप उसको गैदर करें एक साथ सारे कलर चेंजेस को, ताकि लास्ट में काम आए, ठीक है? ठीक है बच्चों? Yes, sir. Then let's move on. One more thing that by which we can find out the purity of the substances: melting point and boiling point. If something having a sharp melting or boiling point, it means the substance is pure.
right? For suppose if you have solid, so the sharp melting point shows that that solid is actually pure. For suppose if we have NaCl, so if NaCl start melting, if it starts melting at 801 degrees Celsius and it end melting at 801 degrees Celsius, it shows that there is no variation in the melting point during the melting, right? It's fixed, it's sharp. It means this NaCl is pure. If during the melting, for suppose the temperature falls, for suppose it's moved towards 801 to 796, if it decreases or if it is increases during the melting and boiling, so you need to keep remember that this range of temperature shows that the substance is not pure, right? Yes, sir. So you need to say that the solid is pure if its melting point is sharp. Solid is pure if its melting point is sharp. Water के बारे में अलग से लिख पा रहा हूँ नीचे. Solid is pure if its melting point is sharp, and if it is impure, so definitely the melting point is going to be decreased. So you can say that impurities in solids decrease their melting point. You need to keep remember. हमेशा solid के अंदर जब भी impurities आएंगी तो वो उनका melting point कम कर देंगी, right? And if you talk about water or any liquid, so you can say that if I am just writing specifically for water, so you can say that water is pure if its boiling point is sharp, and with this 100 degrees Celsius, right, bacho? Yes. And you need to keep remember for any liquid, right? If there would be some impurities in that liquid, so it must going to increase the boiling point of that liquid. So you can say that impurities increases the boiling point of liquid. Impurities in liquid or in water, whatever, increases, not decreases this time, increases their boiling point, right, bacho? For suppose if you have water, if you have pure water, so it should have 100 degrees Celsius the boiling point. But if you have salt solution, so it must have the greater boiling point than 100. It may be somewhere 110 or anywhere, anything, any number, but you just need to keep remember it may be or it must be, you can say that greater than 100. अब वो number कुछ भी हो सकता है. We don't need to learn this कि भाई ये 101 110 होगा, 108 होगा, 109 होगा. It's not in our syllabus, or it's not the thing that we can predict it. For suppose किसी ने 1 चमचा डाला नमक का, किसी ने 10 चमचे डाले, so there are different types of salt solutions. हम नहीं predict कर सकते कि boiling point कितना increase होगा, right? But you need to keep remember increase होगा. अब वो MCQs वगैरह में जिस तरह भी आए, you need to keep remember कि थोड़ा सा increase हुआ, ज़्यादा increase हुआ, बस increase होगा. जो भी increase हुआ वो आंसर होगा, आप उस पर टिक लगा दीजिए. ठीक है बच्चों? Yes. Then we have one more point in syllabus, that why distilled water is used in labs rather than tap waters. So you can simply say that tap water is actually impure. It contains different salts. It contains, you can say that, salts in it. That is why we cannot use this during the laboratory practices, right, Vipul? Right, boys and girls? Yes, sir. Yes, sir. And just look at over here that the substances present in the normal water, which is like from rivers, lakes, and seas. So we have different things or substances in water. And these are like, the first of all, we have dissolved oxygen, which is very necessary. This is a necessary substance.
for the living organisms present in water. Then we have metal compounds like sodium and calcium compounds we have, right? Then we have pollution like plastics. We have sewage, right? We have harmful microbes in water. Then we have nitrates. This is the main one, nitrates. You need to keep remember the source of this. The source of this is fertilizers. They can ask in exams that how nitrates come into the water. This is must. You need to keep remember कि भाई ये fertilizer से आता है. Alright, बच्चों? Yes, sir. And if examiner asks why you use nitrate fertilizer, so you need to keep remember that all the nitrate salts are soluble in water. So we must use some soluble salts as a fertilizer, so it will be absorbed in lands, right? Then one more substance that is present in like water is for phosphates. And again, how phosphate comes into the water? It is from fertilizers and detergents. This is also very important to remember the source of these two. Many times in exams, you will see this question, right? So the source of nitrates and phosphates in water is actually fertilizer and detergents. Right, Bacho? Yes. Okay, then the next page over here, you can see this. What are the main uses of these substances? I already told you that dissolved oxygen is very essential for the aquatic life, and some metal compounds are essential for the human body and animals' life, right? Harmful microbes are like harmful substances are like plastics that are causing issues for aquatic lives. आपने बहुत सारी इस तरह की वीडियोस वगैरह देखी होंगी जिसमें आपको ये नजर आता है कि भाई अंदर जो मछलियां वगैरह हैं वो जो है शॉपर्स वगैरह में क्या हो जाती हैं, स्टक हो जाती हैं, फंस जाती हैं, उनके लिए सांस लेना और जो है ना मुश्किल हो जाता है. दैट्स व्हाई प्लास्टिक एक ऐसी चीज है जो कि नॉन बायोडिग्रेडेबल है, खत्म नहीं होती है. तो वो जब नीचे फेंक देंगे आप पानी के अंदर, तो पानी के अंदर पानी में रहने वाले जो जानवर हैं और जो आप मैरीन लाइफ है उनको डिस्टर्ब करेगी डेफिनेटली. ठीक है. देन सम माइक्रोब्स आर कॉजिंग डिजीजेस फॉर ह्यूमंस. हार्मफुल माइक्रोब्स जो होते हैं वो इंसानों के लिए जो है बीमारी का बाइस बनते हैं. देन सम मेटल कंपाउंड्स आर टॉक्सिक, लाइक आपके पास जो लेड के कंपाउंड्स होते हैं वो काफी टॉक्सिक होते हैं. देन नाइट्रेट एंड फॉस्फेट कॉज डीऑक्सीजनेशन. अगर आप लोगों को पता हो, इस प्रोसेस को एक और नाम दिया जाता है यूट्रिफिकेशन. यूट्रिफिकेशन, राइट? यूट्रिफिकेशन इज द प्रोसेस जिसमें आपने देखा होगा वो समंदर पर और पानी पर, समंदर पर तो खैर नहीं होता, उसमें लहरें आती हैं, जैसे जो स्टैग्नेंट वाटर होता है ना उसके ऊपर ग्रीन कलर की एक लेयर आ जाती है. राइट बच्चों, देखिए आप लोगों ने? यस सर. उस प्रोसेस को हम बोलते हैं यूट्रिफिकेशन. अब हमारे सिलेबस से यूट्रिफिकेशन का लफ्ज रिमूव हो गया, अब वो उसको सिर्फ बोल रहे हैं डीऑक्सीजनेशन. द प्रॉब्लम इज एक्चुअली दिस कि डीऑक्सीजनेशन हो जाती है, वहां पर जो डिसॉल्व ऑक्सीजन है वो बैक्टीरियाज वगैरह यूज कर लेते हैं, जिसकी वजह से वहां पर ऑक्सीजन लेवल, जो डिसॉल्व ऑक्सीजन है पानी के अंदर, वो कम हो जाती है. जब डिसॉल्व ऑक्सीजन पानी के अंदर खत्म हो जाती है या कम हो जाती है, तो एक्वाटिक लाइफ जो होती है, जो मछलियां हैं या जो भी उसमें जानवर या जो आपके पास जो पौधे वगैरह होते हैं पानी के अंदर, उन सब के लिए ऑक्सीजन रिस्पिरेशन का जो है एक सोर्स होता है, और जब ऑक्सीजन कम हो जाएगी तो फिर उनके लिए वो मरना शुरू हो जाते हैं. ठीक है ना? तो यू कैन से दैट कि नाइट्रेट्स और फॉस्फेट अगर पानी में आते हैं तो वो क्या प्रॉब्लम करते हैं. अब यूट्रिफिकेशन हमें बात करने की जरूरत नहीं है, अब हम क्या बोलेंगे, डीऑक्सीजनेशन. ठीक है, सिंपल इज दिस. क्या ऑक्सीजन का जो डिसॉल्व ऑक्सीजन है वो कम हो जाती है. गॉट इट बच्चों? जी सर. Then we need to treat water before using. So if you want to use water in domestic use, or if you want to use in drinking purposes, so you must need to treat the water first, and then you need to use this, right? So the very first process that you need to keep remember is sedimentation and filtration. So it is only used to you can say that remove insoluble substances. So you can say that it is used to remove insoluble substances. It is used to remove insoluble substances. अब फॉर सपोज अगर आपके पास पानी है और उसमें बहुत सारी मिट्टी हो, तो आप क्या कर सकते हैं, उस मिट्टी को रिमूव करने के लिए आप सेडिमेंटेशन कर सकते हैं. उसको थोड़ी देर रखा हुआ छोड़ दें, all the particles of sand settle down in the bottom, and then you can
you can drain off the water by tilting of the container. आप उसको थोड़ा सा टेढ़ा करेंगे और थोड़ा सा पानी आपका क्या हो जाएगा, inclined position पे, उसमें से आप पानी निकाल सकते हैं, and the many particles of sand can be left behind, right? और जैसे प्लास्टिक है और बड़े बड़ा जो आपके पास कचरा होता है, उसको रिमूव करने के लिए आप सिंपल फिल्ट्रेशन कर सकते हैं. और if you want to remove completely the particles, so you can do filtration. अब फिल्ट्रेशन थोड़ा सा स्लो होता है, सेडिमेंटेशन थोड़ा सा फास्ट प्रोसेस होता है, इसलिए हम मेजर पार्टिकल्स को रिमूव करने के लिए सेडिमेंटेशन यूज कर लेते हैं, और जो थोड़ा बहुत भी उसके अंदर मट्टी वगैरह बचती है तो उसको हम बाकी फिल्ट्रेशन से रिमूव कर लेते हैं. Then desalination is used to remove the soluble substances, जो उसके अंदर salts वगैरह होते हैं आपके पास, soluble impurities जो होती हैं उसको आप रिमूव कर सकते हैं by use of distillation type process. ये distillation type एक process होता है, आप उसके through उसको separate कर सकते हैं. So you can say that to remove soluble substances. आप soluble substances को इससे remove कर सकते हैं. Then carbon treatment, it is used to remove the odor of the water. It is used to remove odor, or you can say that any type of smell if they are in water, so you can remove that to remove the odor of water. पानी के अंदर अगर किसी तरह की स्मेल है कि किसी तरह का कोई भी इसमें प्रॉब्लम है, आपने देखा होगा अक्सर बेशतर एक अजीब सी स्मेल होती है पानी के अंदर, वो स्मेल को रिमूव करने के लिए आप क्या यूज करते हो, कार्बन ट्रीटमेंट करते हो, या चारकोल ट्रीटमेंट भी आप इसको कह सकते हैं. चारकोल यूज किया जाता है उसको रिमूव करने के लिए, ठीक है ना. तो उसके टेस्ट को, उसके ऑर्डर को बेहतर करता है ये ट्रीटमेंट. देन क्लोरीनेशन इज यूज्ड टू किल द जर्म्स. इट इज यूज्ड टू किल the germs, right, present in the water. So these are the 4 processes that are continuously using in different industries to purify the water before the domestic use, right, every one of you? Yes, sir. So these are very much important processes that you need to keep remember. Then here we have fertilizer. Fertilizer is also one of the new part in our syllabus that we need to keep remember, and they are the same things. Nitrates and ammonium salts can be used as a fertilizer because all the ammonium salts and all the nitrate salts are soluble in water. So that is why, because they all are soluble. They are all soluble in water, right? And then you need to remember that the major elements for the fertilizer is NPK, means nitrogen, phosphorus, and potassium. These 3 elements are very important for plants. That is why most of the time we need to use these elements as a fertilizer. So for suppose if you are using this one, NH2 twice CO, this is the formula for urea. You can see this, we have nitrogen over there. If you're using any ammonium salt like this, ammonium phosphate, you can see this, you have nitrogen and phosphorus in this. This is one of the very useful fertilizer, right? For suppose many of the time you use ammonium sulfate as well. This is also very useful fertilizer. In this we have nitrogen content, right? Or in the exam they multiple time ask for the percentage of nitrogen in exam, so you need to find out this as well. बेटा किसी का माइक खुला हुआ उसको म्यूट करो. हमें आपको चार्जर वगैरह अगर कुछ चाहिए तो बेटा माइक तो म्यूट करो, हमारी क्लास को डिस्टर्ब ना करें आप. ठीक है, आपके पास बच्चों नाइट्रोजन कंटेंट फाइंड आउट करने के लिए पेपर में आता है एंड इट्स मस्ट, ठीक है ना. तो आपको ये याद रखना है कि जैसे फॉर सपोज अगर मैं आपसे कहूं कि आप इसके अंदर नाइट्रोजन कंटेंट निकालो, सो हाउ कैन यू फाइंड आउट द नाइट्रोजन कंटेंट इन दिस? इट्स सिंपल, वी हैव 2 नाइट्रोजन्स ओवर हियर. What we need to do, it is 14 into 2. We have 2 nitrogens over here, and the total MR of this substance is 132 total MR, and then into 100. So it will give you the percentage of nitrogen in this substance. So in this type of question, they can ask for the percentage of different elements, right? वो आपसे पोटेशियम पूछ सकते हैं, वो सोडियम पूछ सकते हैं, वो आपसे कुछ भी पूछ सकते हैं, बट ज्यादा ये सवाल आपसे फर्टिलाइजर में पूछा जाता है. वो ये बोलते हैं इस तरह से, फॉर सपोज यू हैव 3 different types of compounds, in all of them we have nitrogen, and they can ask like this, बताएं which one is better nitrogenous fertilizer? The fertilizer in which we have nitrogen only, they are termed as nitrogenous fertilizer. So you need to find out the percentage of nitrogen in all the compounds, and then you need to suggest that which one is the best, or you can say that which one is the better nitrogenous fertilizer, right? So you have right now 3 compounds over here. Ammonium phosphate, bacho,
you have ammonium sulfate, right? And you have urea. Once I have finished, then we need to find out which one is the better nitrogenous fertilizer, right? First of all, just see over here what are the uses of these elements in fertilizer. So the nitrogen, it makes plants healthy. It is important for the formation of proteins for the plant. So you can say that it's a very important content for the plant, for the growth of plant, for the strength of plants, because it is providing actually the formation of protein for the plants. Then phosphorus is actually, it helps roots and seeds development. So again, seeds and roots are the very basic part of plants, and these two are very essential as well. Some of the fruits and some of actually the vegetables are also part of roots and seeds, so that's why they are very important. Then potassium is actually strengthen the plant and increase the crop by keeping plants away from the diseases. तो ये उनको बीमारियां लगने से बचाती है, मुरझाने से बचाती है, और बहुत सारे प्रॉब्लम्स जो प्लांट में हो सकते हैं उनसे उनको बचाती है, उनको प्रोवाइड करती है, उनको स्टैमिना प्रोवाइड करती है डिजीज से लड़ने का. These three elements or these three contents are very important for plants that we need to keep remember, right? So जल्दी से मुझे जरा ये वाला क्वेश्चन करके दिखाएं, and then I have one more question with this, और वो मैं आपसे पूछूंगा. पहले आप मुझे करके दिखाएं, which one is the better nitrogenous fertilizer among these three? Just do it quick.